Then we also talked about examples. Anybody remembers about any example? Yeah, sure. सर आपने कहा था कि इस टेबल के लिए टांग हम हटा लेते तो ये मूव करेगी या नहीं करेगी, आपने कहा था कि मूव करेगी, और इस एग्जांपल किया था कि इसमें फोर्सेस अनबैलेंस हो जाती है और इसमें टार्क होती है. So then we talked about the conditions of equilibriums. There are two conditions of equilibrium. Bete. One is translational equilibrium and the other one is rotational equilibrium. So if we say that a body is in equilibrium, then there must be a translational equilibrium and there must be a rotational equilibrium. Translational equilibrium means that the sum of all forces along x direction will be 0. The sum of all forces along y direction will be 0. The sum of all forces along z direction will be 0. So then a body will be in translational equilibrium. But still the body is not in equilibrium because there is another condition, and that condition is the clockwise torques and the counterclockwise torques. So if both of them are equal, then we say that the body is in rotational equilibrium. So if both the conditions are fulfilled, then the body will be in equilibrium. Now let's come and talk about the vectors. Last time we discussed that physics is difficult. Physics is? And we said that physics is difficult because of the concepts of vectors, right? So vectors means directional quantities. Directional? So in physics there are directional quantities, and in physics there are non-directional quantities. Directional quantities are, for example, displacement. So, like there are quantities like this are momentum. So all these and many more, they are directional quantities, and these directional quantities are called vectors. So displacement is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Force is a vector quantity. Electric field intensity is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity. Momentum is a vector quantity, and there are many more. So for these quantities we will always need a direction. So all these quantities when we represent, so we represent them with a letter and an arrowhead.
So whenever there is an arrowhead, this means that this is a vector quantity. This is a vector quantity. So whenever this term comes in any kind of equation, so the left side of the equation, if that is a vector, the right must be a vector. Do you people follow me what I mean? Yes. So if the left side is a vector, the right side will be also a vector. Like I say that E is equal to E1 plus E2. Now this is wrong. This is because this is a vector quantity, but these are not vector quantities. There is no arrowhead on them, but if we make it like this, again this is wrong. So now this is the correct one, that on the left hand side every term is a vector, on the right side every term is a vector quantity. So similarly, if I say that force is this correct or wrong? We said that the left hand side is a force because there is an arrowhead. So the arrowhead means this is a force. This is not the magnitude of a force. This is not the magnitude of a force. So if this is not the magnitude of a force, this is clearly indicated as a vector quantity. But when we look to the right side, there is no arrowhead. There is no arrowhead. So if there is no arrowhead on the right hand side, this means that this is wrong. Because the left hand side is a vector quantity and the right hand side is not a vector quantity. The right hand side is not a vector. That is the magnitude of a vector. That is the magnitude of a vector. But the magnitude of a vector is magnitude. This is not vector. अगर आप लोगों को याद हो, last time we discussed that if any person asks you that your home, where is your home? Do you remember? Yes. So we said that my home is in this direction, 300 meters. This direction, and then I said that this direction is called what? This is called direction. This is called unit vector. This is called unit vector. And 300 meter is called what? That is the magnitude of that one. So this whole story, 300 meter, D is equal to 300 meter. और इसको हम लिखते हैं. Now look, this thing, is this a vector quantity or not? This is a vector quantity because the left hand side is a vector. The right hand side is a combination of a magnitude along with a unit vector. Magnitude along with a unit. बात समझ आ गई? Yes. How we can define the unit vector, sir? मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है? Is it clear? अभी तक जो है कोई मसला तो आप लोगों को नहीं है. Everything is clear. So like we have quantities in physics. Those quantities makes physics difficult than other subject, and those quantities are called vectors. And those quantities requires what? Direction.
And the examples is a displacement, velocity, force, electric field, intensity, magnetic field, momentum, and so on. Torque. Now, when we talk of these vectors, so we already discussed that a vector will be represented by two things. One is 300 meter, and the second thing is direction. So I say that in this direction. In this direction. Now, this direction basically has nothing to do with the magnitude. This is not increasing the magnitude, and this is not decreasing the magnitude. So if you say it like this, this will not affect your magnitude at all. And now you see it here, this is in multiplication. Look, so I say that D vector is D magnitude and D unit vector. So this is 300 meter. Now, when we say the magnitude is here, the magnitude is? So now in magnitude we have two things. One is a number and the second thing is unit. So the magnitude is already the combination of a number and a unit. Now anything we multiply with this, that will not change. If that doesn't change the unit and that doesn't change the number, that will be 1. That will be 1. बात मेरी समझ आ गई है? अगर 1 नहीं होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी. फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा. तो इसलिए आसानी के लिए हमने क्या किया है? ये एक कन्वेंशन है. हमने अपने आसानी के लिए ये एक कन्वेंशन बनाया है. ये कोई इल्हाम नहीं हुआ हमारे ऊपर, कोई इल्हाम नहीं हुआ. हमने आसानी के लिए कि भाई इस डायरेक्शन में मेरा घर 300 मीटर के फासले पर है. अब ये जो इस डायरेक्शन में को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, 300 मीटर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं. बात समझ आ गई? इसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट अ फोर्स. आप इधर आ जाए, इस कुर्सी आ जाए, इस कुर्सी को आप नीचे जोर लगाए. ये हरकत करती है? नहीं करती. इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए. जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाता है, अब देखिए बगैर डायरेक्शन का फोर्स नहीं होता, होता है. तो जिस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया, आप सब ने उसको देख लिया. उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. देखिए इसको हम वेलोसिटी कहते हैं. मतलब ये है कि जब ये मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है, इसको हम इसकी क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं. लेकिन इनिशियली आप देखें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है. लेकिन जब ये फोर्स लगाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. और जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन लग रहा है. और वही एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. बैठे जी जी. जैसे कि आप दिए गए कि ये सर जब वेक्टर होगा तो तब होगा जब हम लेफ्ट और राइट सर जब दोनों पे हम वेक्टर लगाएंगे. तो फिर ये सर वेरिटी सिर्फ एडिशन के लिए है या मल्टीप्लिकेशन के लिए सर? फॉर एनीथिंग, यस सर. फॉर एनीथिंग द लेफ्ट एंड राइट विल बी अ वेक्टर. For anything, if your left and right are not equal, mathematically that will be wrong.
अगर लेफ्ट में आपने मतलब ये है कि वेट लिया है, राइट में क्या होगा आपका यूनिट? वो वेट का ही आएगा। लेफ्ट में अगर आपका यूनिट जो है सारा लेंथ का आ रहा है, राइट में किस चीज का आएगा? सो इफ यू हैव एन इक्वेशन लाइक a plus b is equal to c plus d, so a, the unit of a, the unit of b, the unit of c, the unit of d, all shall be similar. If this is length, this must be length, this must be length, and this, let us suppose that we say that this is length and this is mass, then we say that the equation is wrong. The equation is wrong. So wherever you are in the equation, every part of the equation, every part means ये पूरा, ये जो है ये सारा एक है. So if I want to make it the left hand side, this is magnitude 300 meter, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा 300 Newton, because this is force, this is force, and then I will write a unit vector. I will write a unit vector. Now if you see that the left force is nothing but F, or you can also say it like the same thing. ये गलती हो गई. Now the same thing is here. This is your magnitude and this one is your unit vector, that is direction. That is direction. So like the demonstration you cite here, that when he applied a force, with the force you saw that the initial velocity was 0, and then you saw that the velocity changed. The velocity changed in that direction. The velocity increased. So when the velocity increased, it means that acceleration was produced. And we say that force is equal to ma. Now look, the direction of acceleration and the direction of force. So the force basically is producing acceleration in the direction of the force. In the direction of the force. So we forgot acceleration here. हमें इधर लिखना चाहिए था. बात आप लोग समझ गए ना? जी बेटा. अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन सर बार-बार चेंज हो रही हो तो फिर सर उसको किस तरह भी? फॉर एग्जांपल सर्कुलर एक्सेलरेशन है. हाँ. अगर एक बॉडी की जो डायरेक्शन है वो बार-बार चेंज होती है तो हम उसको किस तरह? नहीं, देखिए कि उसका हम क्या चाहते हैं. What are we looking for? देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दी कि ये भी तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर पॉइंट पर तो एक वेलोसिटी है या नहीं है. बात समझ गए ना? अब अगर एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार ये तो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर उसी पॉइंट पर ले एग्जैक्टली, फिर क्या होगा? वो वेलोसिटी. मैं एक मिसाल दे देता हूँ. यू नो द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार. So the speedometer, it starts, let's suppose, from 0 to 120 kilometer per hour. So initially the velocity was how much? 0. So it changes, and the speedometer for each instant shows the velocity. For each instant the speedometer shows what? Velocity. Now, but we know that it is changing. It is changing, and this change we say that this is called what? Acceleration. समझ आ गई बात की? जी. सर आपने कहा है कि वेक्टर की वजह से फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट है. क्या सर ये वेक्टर एटम की स्टडी में इन्वॉल्व है?
क्या ये सभी का फिजिक्स में डाल जाए? यार बात सुने, अब आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जो रिलेवेंट नहीं है। हम सर वो भी तो मुश्किल बनाती है ना फिजिक्स को। नहीं, कौन कहता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स मुश्किल है? आपने मेरे पोस्ट देखे उधर जो है, ऐसा नहीं है। सबसे मुश्किल फिजिक्स जो है ये है। न्यूक्लियर फिजिक्स कौन कहता है कि मुश्किल है, या एटॉमिक फिजिक्स कौन कहता है मुश्किल है? सबसे मुश्किल फिजिक्स क्या है? वेक्टर्स की जो कहानी शुरू हो जाती है, फिर वेक्टर से आप टेंसर्स में जाते हैं। यस सर, जो कि नाम वेक्टर है उसका। नहीं, वेक्टर्स वो भी डायरेक्शनल है। यस बात समझ गई? यस। तो यही चीज़ों को मुश्किल बना देता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्यों न्यूक्लियॉन्स, ये क्यों कंबाइंड है, तो उसकी थ्योरीज है 2-4, आप उसको पढ़ लेते हैं। बात समझ गए? लेकिन इधर मतलब ये है कि अक्सर बंदा पढ़ भी लेता है, कर भी लेता है, आखिर में पूछो कि एरिया स्केलर है या वेक्टर है। बंदे को पता नहीं होता कि एरिया स्केलर है या वेक्टर है। अक्सर लोगों ने MSc भी किया होता है, आप उनसे पूछे तो देखें कि आगे के लेवल की बातें, लेकिन बेस इधर से बनता है, बेस इधर से बनता है। यही बेस फिर आप सारे फिजिक्स में फिर अप्लाई करते हैं। अगर आपका बेस मजबूत है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स का मसला नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स का मसला नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स का मसला नहीं है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोई मसला नहीं है, ये सब फिर आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल जो है, ये जो आपका जो इनिशियल फिजिक्स है ना, अक्सर लोग जो इधर कामयाब हुए वो अच्छे फिजिसिस्ट बन जाते हैं, जो इधर कामयाब नहीं हुए पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जो है मैं ख़ुद आप लोगों के साथ आज ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि ये मैं सेकंड ईयर में गया, तो जब मैंने काम शुरू किया तो फिर वेक्टर्स का उनको कंसेप्ट का नहीं पता था ज़्यादा। सारी चीज़ें बेस करती है आपकी वेक्टर्स पर। मतलब ये है कि आप अगर फर्ज करें न्यूक्लियर में जाते हैं तो पार्टिकल्स, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। अब अगर आपको वेक्टर का पता है तो आप एंगुलर मोमेंटम को समझ सकेंगे। टॉर्क क्या है? वो भी वेक्टर है। वो भी फिर आप ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर में या जिधर भी जाते हैं, लेकिन बुनियाद इधर से बनता है। ठीक है बेटा? जी बेटा। सर जी, आपने हाँ। आपने कहा कि लेट्स सपोज ये लेंथ 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 सारे, हाँ हाँ, तो अगर इनको प्लस किया जाए यानी कि तो फिर हमारे पास इनका सारा का यूनिट एक होना चाहिए, लेकिन फोर्स में मास स्केलर है और वो यानी कि वो उनका यूनिट सेम आना चाहिए। यहाँ स्केलर है, स्केलर अगर वेक्टर एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर है तो इनका फिर एक वेक्टर को क्यों ये राइज करता है सर? फोर्स वेक्टर है ना सर, तो मास तो स्केलर है सर, ये वेक्टर को क्यों राइज करता है? किधर? एक्सेलरेशन। यार देखे कि इधर एक के ऊपर आपका क्या है, दोनों के ऊपर तो नहीं है ना। मास आपके पास नंबर है 10 किलोग्राम, दिस विल नॉट अफेक्ट योर डायरेक्शन। मतलब यह है कि स्केलर मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर दैट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर। आप यहां पर m को 10 किलोग्राम, इससे इस पर कोई फर्क पड़ेगा? जी जी। सर हमारे पास जो वर्क है सर जी, वो FD सर, वो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट है और उस स्केलर बनता है। नहीं FD नहीं है। अब तो प्रोडक्ट में हम नहीं गए ना, अब थोड़े से आगे जा रहे हैं। अभी हम प्रोडक्ट्स में नहीं गए। हम इसका जो क्वेश्चन है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। व्हेन यू मल्टीप्लाई 10 विद अ वेक्टर, what will happen?
that will just increase the force 10 times. That will just increase the force 10 times. That will only increase the magnitude. And if the sign is negative, that will change. If the force is in this direction, that will be changed to this direction. So when we multiply a scalar with a vector, that will not affect the nature of a vector. That will not affect the nature of a. Now, the question of the other person, the other student, he is talking about now about the product of vectors. So again, I said that physics is difficult, and the reason is vectors. Because when you multiply vector with a vector, I multiply vector with a vector. Let's suppose now we have two vectors. We multiply them. But now the product of both of them is not the same. The product of both of them are not, although maybe the unit is the same. आखिर में जो है unit तो same आएगा ना? Yes, sir. But one gives you a vector quantity and the other gives you a scalar quantity. Torque. This is a scalar quantity and this is a vector quantity. Like आप किसी भी subjects को ले लें, किसी और subject में ऐसा है कि दो चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब डॉट लगाते हैं तो एक चीज़ बनता है, जब क्रॉस लगाते हैं तो कहानी उसकी टोटली चेंज हो जाती है, टोटली नेचर ही चेंज हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट मेक्स, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि ये समझना जो है, जिस तरह हमने उधर बात की, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि ये सिर्फ आर एफ नहीं है, जिस तरह उसने मुझे कहा एफ डी इज वर्क. You will have to have dot. If you don't put dot, then it can be anything. It can be a vector quantity. आपने कहा F D क्रॉस F, मैं कहता हूं कि टॉर्क है. ये सिरे से मैं कहता हूं कि ये वर्क है ही नहीं. कह सकता हूं, कह सकता हूं या नहीं कह सकता? है, ठीक है. तो ये जो फिजिक्स का ये जो कंसेप्ट है, दैट यू मस्ट बी वेरी गुड इन नॉलेज, इन एनालाइजिंग थिंग्स. बाकी चीज़ों में तो आप रट्टा मार देते तो बात आसान हो जाती है. इसमें रट्टा से काम नहीं चलेगा. इसमें आपने सिचुएशन को एनालाइज करके उसके मुताबिक फिर उसको देखना है, और फिर उसके मुताबिक फिर आपने उसका हल फिर निकालना होता है, उसको फिर देखना होता है. सर जब हम या क्रॉस डालते हैं या डॉट लिखते हैं तो फिर ये क्यों डिफरेंशिएट हो जाता है सर? ये क्यों डिफरेंशिएट हो जाता है? मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स में हम नेक्स्ट जाएंगे, डिटेल्स में नहीं जाते उसके, क्योंकि फिर ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों ने बताया है, पहले क्लास में मैं गया उसमें मैंने ज़्यादा टाइम लिए, तो जो लोग मेरे साथ थे वो कहते हैं कि थोड़ा कम टाइम लिया करें. उधर नहीं जाएंगे, नेक्स्ट में क्रॉस और डॉट में जाएंगे, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट. और अगर आप लोगों को वेक्टर्स आता है, फिर आपको सारा फिजिक्स आता है, देन यू विल एंजॉय फिजिक्स. अगर नहीं आता फिर आप इसको सीखेंगे, और सीखने में हमारी जो लास्ट टाइम बात हुई थी, आपको नींद आ रहा है?
हाँ, उठे उठे, आखिर तक नहीं, वो पीछे वाला, आप बैठे आखिर तक आपने खड़े रहना। हाँ, कि आपकी नींद जो है पीछे चले जाए, पीछे, कि आपकी नींद जो है ये पूरी हो जाए। हाँ, क्या निकल गया था? चले ठीक है, बैठो। मैं समझा के कहता कि पेट्रोल निकल गया। अच्छा, तो हमने we talked about vectors, but we didn't talk about scalars, because last time we said that scalars are simple things. If you have one dozen of eggs, या आप इसको 12 eggs कहें, 1 kg sugar, तो so 1 kg, 2 kg, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सारे जो चीज़ें हैं जितनी भी है, ये सारे हमारे पास क्या है, जो आम तौर पर हम हिसाब किताब करते हैं, मोस्टली जो है हमारे पास स्केलर्स होते हैं। मोस्टली हमारे साथ इसलिए जो है लोगों को उनको करने में आसानी होती है, ज़्यादा जो है तो मेरे ख्याल में विद दिस वी डन फॉर द डे। शायद 1 बज गया, कितना टाइम रहता है? सो एनीवे, नेक्स्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स अगर आप सीख जाते हैं, अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो फिर आप लोगों को फिज़िक्स में जिस तरह इसने कहा, बहुत सारी चीज़ें फिर आपके लिए फिर आसान हो जाती है। क्योंकि आप देखें कि कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल है, आप उसका एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इज़ नेचुरली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन 2 क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो फिर आप उसको निकाल भी सकते हैं। इसी तरह आपके पास प्लैनेट्स हैं, आपके पास ये सारा, जिस तरह हम कहते हैं कि ज़मीन है, ज़मीन या जितनी भी सैयारे हैं, ये एलिप्टिकल पाथ्स में जाते हैं, एलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर में नहीं है। और उसका फिर हम कहते हैं कि हमारे पास उसका जो है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास L इज इक्वल टू R क्रॉस P, विच इज R P साइन थीटा। N, अगर मैं N ना लिखूं तो फिर ये ठीक होगा, फिर ये गलत होगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ये लिखूं तो ये किसके बराबर होगा? आर पी एंड 90 साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो आर एम वी। तो जब आपका पाथ एलिप्टिकल है, रेडियस को देखें, mass is constant, R and V and L is constant. L is so if L is constant, M is constant. If R is increased, what will happen to velocity? Velocity will be decreased. So like when we talk about planets, so the velocity of the planet will be not the same everywhere. So when it comes closer to this point, now R is smaller. R is smaller. So when R is smaller, then velocity is तो ये वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि देखें कि फिजिक्स में ये यहाँ से आपने अगर परस करे कोई भी किधर भी पढ़ना है ना, कंसेप्ट आपके फर्स्ट ईयर के वेक्टर्स का कंसेप्ट से। लेकिन अगर आपको क्लियर है तो आप वो मुश्किल काम भी आप कर सकते हैं और इससे उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चले ठीक है, विद दीज वर्ड्स सी यू होपफुली नेक्स्ट
Saturday inshallah.